Sum and substance means the topics we are going to read about the pre-colonial education, about English system of education in India, about Orientalist versus Angelistic, National Council of Education, then beginning of modern education in Aligarh and Baroda. Aligarh Baroda में modern education कैसे start हुआ, about Rabindranath Tagore's vision, traditional versus modern education system. Now look at these pictures, retrieve it, find it out. What differences do you find between ancient education system and modern education system? Write any 5 differences. Now see, ये है एंशियंट एजुकेशन सिस्टम. वहाँ बाहर पेड़ के नीचे बैठ के एजुकेशन दिया जाता था, ज्ञान दिया जाता था, ऋषि मुनि होते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, सिखाते थे. They were amongst in the nature, they sat in the nature and they used to learn many things. Now modern education system, हम क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं. We are cut off from the nature. हमें नेचर से कॉन्टैक्ट में हम नहीं रहते हैं, हम एक कमरे के अंदर रहते हैं. वहाँ a teacher is there, a blackboard is there, and the students, they don't sit on the floor, they sit on the chair and they get their education. The chair tables are there. Okay, so find out 5 differences. अभी मैंने आपको समझाया तो उसमें भी differences बता दिए कि क्या क्या differences हैं. So find it out and write it. Now the introduction. The Indian education system has been evolving since the British period. British period से Indian education system evolve हो रहा है, particularly at the high school level. In 1950s, the Senior Cambridge examination gave way to the Indian School Certificate Examination (ICSE), administered by the Council for the Indian School. Certificate Examination (CISCE), simultaneously the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, began consolidating its position. धीरे धीरे ICSE पहले आया, उसके बाद CBSE आया. In the course of time, states across the country came up with their own boards to provide quality education. और इसके साथ साथ ही जो states थे, हमारी कंट्री के जो स्टेट्स हैं, वो अपना बोर्ड लेके आए. दे केम अप विद देयर ओन बोर्ड, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके. प्री कॉलोनियल एजुकेशन. प्रायर टू द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, एजुकेशन वॉज नॉर्मली इम्पार्टेड बाय रिलीजियस फंक्शनरीज. अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जब तक इंडिया में नहीं आए थे ब्रिटिशर्स, तब तक ये जो एजुकेशन था ये रिलीजियस फंक्शनरीज के द्वारा दिया जाता था. Pathshalas manned by Pandits and Brahmins were there to impart elementary education to Hindu students, while tolls were for higher education. There were often no fixed school buildings. कोई school buildings नहीं हुआ करते थे, fixed school buildings नहीं होते थे. Teaching happened either under a tree, अभी आपने देखा उस picture में, या तो tree के नीचे बैठ के होते था, या in a temple or in the teacher's house. There was no fixed fee and the entire community supported the teachers or paid their fees. कोई फिक्स्ड फी नहीं होती थी, टीचर कोई फिक्स्ड फी नहीं देता था, लेकिन जो पूरी कम्युनिटी थी वो सपोर्ट करती थी टीचर्स को, उनकी फी भी करती थी. The language of instruction was Sanskrit and education was restricted to only young men of the higher caste. लेकिन एजुकेशन जो था वो रेस्ट्रिक्टेड था यंग मैन के लिए, और वो भी जो हायर कास्ट के होते थे. सी स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन गुरुकुल. गुरुकुल में किस तरह से पढ़ाया जाता. गर्ल्स यूजुअली डिड नॉट हैव एक्सेस टू एनी एजुकेशन. अब गर्ल्स के लिए एजुकेशन नहीं अलाउड था. द सब्जेक्ट मैटर, लॉ, religion, astronomy, logic, literature and learning was based on traditional texts. Rote learning was preferred and students were expected to memorize traditional knowledge and ancient scriptures. Rote learning प्रेफर किया जाता था कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल याद कर लें, अच्छे से मेमोराइज कर लें ट्रेडिशनल नॉलेज और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को. There was no printed textbook.
For Muslims, maktabs were for elementary education, while the madrasa imparted higher education. The language of instruction was usually Persian or Arabic. जो language of instruction था या तो Persian होता था या Arabic होता था. And once again it was traditional knowledge that was available to the students. Instruction began with the child writing the letters of the alphabets in sand. और बच्चे कहाँ पे लिखते थे? कॉपीज बुक्स नहीं होती थी तो वो अल्फ़ाबेट्स को सैंड पे लिखते थे, बालू पे लिखते थे. When his fingers were well trained, he began writing on a wooden slate smeared with rice paste and pulverized charcoal. और जब उसकी फिंगर सैंड पे अच्छे से चलने लगती थी तब उसको दिया जाता था एक वुडन स्लेट. Another variety of slate was made from cloth stiffened with rice water and covered with charcoal and several gums. और एक और तरह की स्लेट थी, एक तो वुडन स्लेट थी, दूसरी तरह की जो स्लेट थी वो थी क्लॉथ से बनी थी. क्लॉथ को राइस का जो वाटर होता है उससे स्टिफ कर दिया जाता था और फिर उसको चारकोल और दूसरे गम से गोंद से कवर कर दिया जाता था. A pencil made of white clay was used to write on these slates. You must have seen some slates. आपने देखी भी होंगी slates. The writing could be wiped off with a wet cloth. चौक से या स्लेट पत्ती जिसे कहते हैं, स्लेट पत्ती, उससे लिखा जाता था उस पर और गीले कपड़े से उससे साफ किया जाता था. These were inexpensive materials made locally by the pupils, parents or neighbors or older playmates. After learning the letters, the pupil proceeded to learn consonants, vowel signs, the names of birds, trees, etc. पहले तो उनको क्या सिखाया जाता था? Consonants. उसके बाद vowels. पहले letters, फिर consonants, फिर vowel signs और names of birds, trees, etc. And then began arithmetic, which started from the counting of numbers. फिर arithmetic start होता था जिसमें कि number counting सिखाया जाता था. Went up to fractions, measures of capacity, area, weight and so on. Overall, it seems that there was a system of community-based elementary education system across India before the colonial period. अब ये सब colonial period से पहले की बातें हैं. English system of education in India. The British came to India as a trading group. एक ट्रेडिंग ग्रुप बन के ब्रिटिशर्स इंडिया में आए. They showed very little interest in the promotion of education in India. उनको ट्रेड से मतलब था, उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था. Eventually, when they took control of the administration of the country, they felt the acute need for clerks to maintain records and files. लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया इंडिया की, तब उनको महसूस हुआ कि उनको क्लर्क्स चाहिए जो कि रिकॉर्ड्स और फाइल्स को मेंटेन कर सकें. It was not viable to get clerks from England for such low paid posts. और इतने low paid post के लिए ये सही नहीं होता कि वो वहाँ से इंग्लैंड से लोगों को लाते. That was when they decided to introduce the English system of education in India. तब उन्होंने इंडिया में इंडिया के लोगों के लिए English system of education introduce किया. Only a few educational institutions were set up to ensure a steady supply of Indian employees to the law courts run by the company in India. Their knowledge of classical languages was utilized by the British to establish correspondence with the native states. और native states से correspondence करने के लिए जो इंडियन लोग थे उनका जो classical language था उसको ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया natives के साथ correspondence करने के लिए. The first institution of such type were the पहले institutes कौन से खुले थे institutions? Calcutta Madrasa was set up by Warren Hastings in 1781 for the study of Muslim law and related subjects. Sanskrit College was established by Jonathan Duncan at Benares in 1791 for the study of Hindu law and philosophy. The Fort William College was established in 1800 for the training of civil servants of the company in languages and customs of India. Now, Wood's Dispatch, practical and moral education. क्या था ये Wood's Dispatch?
आइए पढ़ें। The proposed benefits of English education were brought out more clearly and better elucidated in 1854 in the Wood's Dispatch. This was a long note on education in India prepared by Sir Charles Wood. Sir Charles Wood ने एक बहुत लंबा एक नोट प्रिपेयर किया था फॉर एजुकेशन इन इंडिया, उस पे बेस्ड था। Who was the president of the board of control of the East India Company? अब चार्ल्स वुड कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ईस्ट इंडिया कंपनी में। As the president, Wood in 1854 sent a dispatch to Lord Dalhousie, then the Governor General of India, as dispatch number 49 on 19th July 1854 for creating a properly articulated system of education. चार्ल्स वुड ने डलहौजी को एक डिस्पैच नंबर 49 भेजा जिसमें कि एक क्या क्रिएट किया था? प्रॉपरली क्रिएटेड articulated system of education for the primary school to the university. The renewal of the company's charter in 1853 provided the occasion for the dispatch. The Woods Dispatch highlighted two practical benefits of promoting education in India. अब जो वो dispatch था, वुड्स डिस्पैच में क्या था, क्या हाईलाइट किया था उस वुड्स डिस्पैच में? दो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, क्यों प्रमोट करना है एजुकेशन को इंडिया में, क्यों प्रमोट करना चाहिए, उसके बारे में था। फर्स्टली, एजुकेशन वाज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट एन इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग whereby Indians would understand the benefits of British rule and thereby adopt a Western lifestyle and clothes, providing a market for English goods in India. पहला तो था कि एजुकेशन क्यों प्रमोट करनी थी, क्योंकि एक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसमें कि इंडियंस समझ जाएं कि ब्रिटिश रूल का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, और जिस कारण वो क्या करें, वो समझने के बाद वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर ले। एंड सेकेंडली, थ्रू द मॉरल क्वालिटीज प्रमोटेड बाय एजुकेशन सो इम्पार्टेड, Indians would attain higher levels of morality and become more honest and trustworthy. Fine? Now, to achieve these aims, the Woods Dispatch made the following recommendations. अब इन aims को achieve करने के लिए Woods Dispatch ने कुछ recommendations रखे। The dispatch drew special attention of the government to the importance of placing the means of acquiring useful and practical knowledge within reach of the great mass of people. अब special attention government का उन्होंने इस dispatch ने government का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया to the importance of placing means of acquiring useful and practical knowledge. It declared that the aim of education in India was to impart Western education and the medium of instruction for higher education would be English. अब उसमें क्या डिक्लेयर किया गया कि इंडिया में एजुकेशन देने का एम क्या है? इट वॉज टू इम्पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करना उनका मेन एम था, और जिसका कि मीडियम होगा इंग्लिश। However, it also emphasized the importance of vernacular languages. It proposed to set up vernacular schools in villages at the lowest stage, followed by Anglo-vernacular high schools and affiliated colleges at the district level. It proposed, ये सब dispatch में ये सब propose किया गया था. It proposed the formation of a department of public instruction under the charge of a director in each province. The universities in the model of London University were proposed to be set up in Calcutta, Bombay and Madras. See, this is Calcutta University, one of the first universities of modern India, Calcutta University. Fine, children. It mentioned the need for vocational trainings and setting up of technical training institutes, including teachers training institutes. Now, Wood's Education Dispatch formed the basis of the education policy of the British government in India since 1854. अब ये जो वुड डिस्पैच था, इसने
एक बेसिस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी सेटअप किया किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का. इट केम टू बी कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. It was indeed a landmark in the history of education and presented a comprehensive plan for the later development of the educational system in the subcontinent. Now, interpretation. In accordance with the Woods Dispatch, education departments were established in every province and universities were opened in Calcutta, Bombay and Madras in 1857. अब वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स सेटअप किए गए थे हर प्रोविंस में और यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास में. पंजाब इन 1882 एंड इलाहाबाद नाउ प्रयागराज इन 1887. ओरिएंटलिस्ट्स वर्सेस एंजेलिसिस्ट्स. The Charter Act of 1813 made the provisions for encouraging Indians to study the modern sciences in India. जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसमें क्या प्रोविजन था? टू एनकरेज इंडियंस जिससे कि वो मॉडर्न साइंसेस की स्टडी कर सके. द एक्ट मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट असाइड अ सम ऑफ ₹1 lakh for the purpose of education. However, the amount was not utilized until two groups emerged with different views on the content and medium of instructions. They were the Angelicists and the Orientalists. दो ग्रुप्स आ गए थे, इसलिए ये यूटिलाइज नहीं हो पाया ये अमाउंट because two different groups emerged. Who were Angelicists? कौन थे? This team insisted on English being used as the medium of instruction and the team was led by Lord Macaulay. He was Lord Macaulay. अभी जो एंजेलिसिस्ट थे इस टीम को लीड कौन कर रहा था? लॉर्ड मैकाले. और इसमें इस टीम ने इंसिस्ट किया कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए. एंड ओरिएंटलिस्ट्स हु वर दे? H.T. Prinsep supported the traditional learning and the use of vernacular languages such as Sanskrit, Arabic and Persian. जो H.T. Prinsep थे उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया? ट्रेडिशनल लर्निंग को सपोर्ट किया और यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जिसमें कि संस्कृत, अरबिक और पर्शियन आते हैं. फाइनली द एंजेलिसिस्ट्स views were accepted and Lord Macaulay wrote the Macaulay's Minutes which became the basis of the 1835 Act passed during the period of William Bentinck. फाइनली एंजेलिसिस्ट जो थे उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट किया गया और लॉर्ड मैकाले ने क्या लिखा? मैकालेज मिनट्स, जो कि बेसिस बन गया 1835 एक्ट का. और वो पास कब हुआ? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक. आफ्टर दिस एक्ट इंग्लिश एजुकेशन वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इस एक्ट के बाद इंग्लिश एजुकेशन को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में. In 1844, a law passed which restricted the government jobs only to those who had knowledge of English. Now, the National Council of Education. Many Indians were educated in English medium colleges, schools and colleges. This made them more aware about what is happening in the rest of the world. अब बहुत इंडियंस ने क्या किया? स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में उन्हें एजुकेशन दिया, स्कूल्स या कॉलेजेस में उनको एजुकेट किया गया. अब उससे वो ज़्यादा और ज़्यादा अवेयर हो गए कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है. They got to know about great Western thinkers who talked about the equality of humans and the freedom of the nation. This stirred a nationalistic spirit in the minds of the educated people. अब जो educated people थे उनके माइंड में एक nationalistic spirit का जन्म हुआ. Soon the country witnessed popular uprisings in the form of Swadeshi and boycott movements. Indians stopped going to English medium schools and colleges as a mark of their protest. और बहुत जल्द ही इंडिया ने विटनेस क्या किया? कुछ पॉपुलर अपराइजिंग्स हुए
किस फॉर्म में, स्वदेशी के फॉर्म में या बॉयकॉट मूवमेंट्स के फॉर्म में। On 16th November 1905, a few eminent nationalists, including Rabindranath Tagore, Aurobindo Ghosh, Raja Subodh Chandra Malik, and Brajendra Kishore Roy Chaudhary, met to discuss the idea of a National Council of Education. In a meeting held a few months later, Subodh Chandra Malik pledged 1 lakh rupees for the foundation of a national university in Bengal, which is now जादवपुर यूनिवर्सिटी। और कुछ महीने बाद ही सुबोध चंद्र मलिक ने 1 लाख रुपये प्लेज किया, किसके लिए? फॉर द फाउंडेशन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल, जिसे कि आज कहा जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। The objective in setting up the institution was to challenge the British rule over education by offering education to the masses on national lines and under national control. Raj Bihari Ghosh was appointed the first president of the university. और इस यूनिवर्सिटी के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? राज बिहारी घोष, इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट। नाउ टैगोर्स विजन, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या विजन था? During his childhood, Rabindranath Tagore found the atmosphere of schools quite suffocating. अपने चाइल्डहुड में रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सफोकेटिंग, उनका दम घुटता था उस एनवायरनमेंट में। फॉर हिम द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन, उनको जेल लगती थी, स्कूल जेल लगता था। ही वॉन्टेड अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन कुड लर्न वाइल एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड, वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ पे बच्चे अपने बचपन को एंजॉय करके एजुकेशन गेन करें। ही वॉन्टेड एन एटमॉस्फेयर वेयर अ चाइल्ड्स क्रिएटिविटी कुड बी अनलीश्ड। ही सेट अप शांतिनिकेतन नियर कलकत्ता इन 1901, और उन्होंने इसी सोच के कारण उन्होंने शांतिनिकेतन सेटअप किया कलकत्ता में 1901 में बनाया शांतिनिकेतन। इट वॉज एन ओपन एयर स्कूल। टीचर्स वर एनकरेज टू हार्नेस द रियल एनर्जी एंड क्रिएटिविटी इन चाइल्ड। वहाँ पे टीचर्स को ये एनकरेज किया जाता था कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर, उनकी जो रियल एनर्जी और क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर इन शांतिनिकेतन। See children, he is Rabindranath Tagore. After he received the Nobel Prize, the school was expanded into an international university and renamed as Vishwa Bharati. शांतिनिकेतन को रीनेम किया गया, विश्व भारती कहा गया, और उनको किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला। टैगोर envisioned a center of learning which would have the best of both East and the West. The university embodied this principle. It has 2 campuses. यूनिवर्सिटी के 2 campuses हैं विश्व भारती के। One is at शांतिनिकेतन and the other at श्रीनिकेतन। Okay? AI facts. The main role of AI in education is the automation of both academic and administrative tasks, personalized learning and all-time accessibility. Now let's read about Mahatma Gandhi and Nai Taaleem. Mahatma Gandhi argued that Western education only focused on reading and writing. महात्मा गांधी ने हमेशा महात्मा गांधी इस आर्ग्यूमेंट में रहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो केवल फोकस करती है पढ़ने में और लिखने में। लर्निंग टू रीड एंड राइट वाज सिंपल लिटरेसी। लिखना और पढ़ना आना एक सिंपल लिटरेसी होती है, एंड लिटरेसी वाज नॉट एजुकेशन। लिटरेट होना एजुकेशन नहीं है। He said education meant all-round development in children and men, women, not just the ability to read and write. Just पढ़ना और लिखना आना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट एक बच्चे का या किसी मेन का या वुमेन का। He suggested that craft, art, technical skill, literacy and education should all be integrated into one scheme. उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी का सजेशन था कि ये जो आर्ट, क्राफ्ट, टेक्निकल स्किल्स, लिटरेसी है, ये सब एक इंटीग्रेट हो जाना चाहिए,
एक साथ कर देना चाहिए इनको। ही कॉल्ड दिस नई तालीम, और इसको उन्होंने नई तालीम का नाम दिया। अ बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम विच विजुअलाइज्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग अगेंस्ट द कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम विच impartalized formal education and real life. The Nai Talim aimed at bridging the gap and in achieving education through solving problems faced in real life. Now objectives of Nai Talim. अब इस नई तालीम के objectives क्या थे? To provide instruction and training in such branches of learning that would promote a classless and casteless society. नई तालीम के ऑब्जेक्टिव्स थे इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग कि उससे क्या हो, एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बने। टू कैरी आउट रिसर्च एंड डिसेमिनेट नॉलेज, to function as a center of extensive work leading to integrated rural development. Now children, the spot inspect we have just read till now, whatever we have read, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके कुछ questions हैं, so just go through the questions and answer them. I'll just read the questions for you. Why was Calcutta Madrasa set up? क्यों बना था Calcutta Madrasa? Name the places where the British established universities. कहाँ का university establish किए थे? Why did Mahatma Gandhi want children to be taught some craft? जिससे कि all round development हो. What is the full form of ICSE and what do you mean by Angelicists? Okay? Now moving further, beginning of modern education in Aligarh and Baroda. अलीगढ़ और बड़ौदा में मॉडर्न एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ? अलीगढ़. In Aligarh, Western education began largely due to the efforts of Sir Syed Ahmad Khan. सर सैयद अहमद खान के एफर्ट्स के कारण ही अलीगढ़ में वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हुआ. अ रिफॉर्मर. कौन थे सर सैयद अहमद खान? रिफॉर्मर हु वांटेड टू मॉडर्नाइज द मुस्लिम्स, जो कि मुस्लिम्स को मॉडर्नाइज करना चाहते थे. He established English medium schools. He also set up the Scientific Society at Aligarh to encourage rational thinking. और सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, खोले, और उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी भी अलीगढ़ में बनाई जिससे कि रैशनल थिंकिंग को एनकरेज किया जा सके. In 1875, Sir Syed Ahmad Khan established the, look, this is Aligarh Muslim University. So in 1875, Sir Syed Ahmad Khan established the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh, which later became the Aligarh Muslim University. अभी देखा आपने Aligarh Muslim University, इसका पहले नाम था Mohammedan Anglo-Oriental College. In this institution, he introduced technical education along with the study of arts and science. Arts and science भी पढ़ाया जाता था वहाँ और technical education भी दी जाती है. And the medium of introduction was English. The Baroda University. The concept of establishing a university at Baroda, present-day Vadodara, was first visualized by Dr. Jackson when, as principal of Baroda College in 1908, he advocated the establishment of a science institute on an improved and independent basis. Look, this is Baroda College, Vadodara College in 1908. Fine. In 1916 and again in 1919, review committees recommended setting up a civic university at Baroda. In 1926, the Baroda University Commission was appointed, which submitted its report in 1926. 1926 में बड़ौदा यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसने की एक रिपोर्ट सबमिट की. Finally, the Baroda University was approved by the Legislative Assembly in 1949. Now, the traditional versus modern education system. जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थे और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके बीच का डिफरेंस देखते हैं. Let us now compare the traditional and the modern systems of education.
The traditional system of education had the following characteristics. पहले हम पढ़ेंगे traditional education system के बारे में. A traditional school did not have any of the features that you see in schools nowadays. आजकल जो schools में हमें देखने को जो features देखने को मिलते हैं वो पहले traditional schools में नहीं थे. There were no classrooms, no textbooks, no roll call, not even school buildings. कुछ भी नहीं होता था पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में. कोई टेक्स्ट बुक नहीं होते थे, कोई क्लासरूम नहीं होता था, कोई रोल कॉल, जैसे हम रोल कॉल होते हैं ना, टीचर अटेंडेंस लेती हैं, वो नहीं होता था. इवन स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं होती थी. स्कूल्स वर वेरी ऑफन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड वन टीचर. एक ही टीचर वो क्लास लेती थी या लेता था. The traditional schools were based on the requirements of the local people and run by them, in a sense that they only taught you as much as you needed to learn. जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे वो किस पे बेस्ड थे? जो भी लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी उस पे बेस्ड थे. उतना ही बताया जाता था, सिखाया जाता था जितना उनको ज़रूरत होती थी. They were very affordable and it was not always necessary to pay fee in cash. बहुत अफोर्डेबल होते थे, हर कोई जा सकता था और कोई ज़रूरी नहीं था कि फ़ी को कैश में ही पे किया जाए. They were based in the local life cycles. Thus, the school would not be held during harvest. Harvesting के टाइम पे स्कूल ओपन नहीं होते थे. This suited the rural children. जो विलेज से बच्चे आते थे उनको ये सूट करता था. Learning was in local languages and traditional knowledge was imparted. Till the middle of the 19th century, the colonial rulers were mostly concerned with higher education. But after the Woods Dispatch, they began to concentrate on vernacular education as well. 19th century के मिड तक तो जो colonial rulers थे वो ज़्यादातर कंसर्न किससे थे? हायर एजुकेशन से. लेकिन जब से वुड्स डिस्पैच आया उसके बाद से वो वर्नाकुलर एजुकेशन पे भी कंसंट्रेट करने लगे. Let us take a look at some of the changes they were able to bring among in the realm of education in India. क्या क्या changes ला सके वो? Government appointed pundits in charge of 4 to 5 schools. It was their job to go around the schools and make sure that the teaching was of a certain standard and that classes were taken as per a timetable. Government ने पंडित्स अपॉइंट किए, पंडित इन चार्ज ऑफ 4-5 schools. वो जाते थे, स्कूल का राउंड लेते थे और देखते थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं. They submitted periodic reports to the government. There was thus the beginning of state supervision of education. Education no longer remained a local or regional affair. वो कोई local या regional affair नहीं रह गया था education तब तक. The format of teaching changed completely. जो teaching का format था वो पूरी तरह से बदल गया था. Teaching was done through textbooks. Students were expected to attend schools regularly, pay fixed fee monthly and appear for exams to test their ability. और जो फॉर्मेट चेंज हुआ उसमें टेक्स्ट बुक यूज़ की जाने लगे. स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रेगुलरली रोज़ आएँ स्कूल में और एक फिक्स्ड मंथली फ़ी पे करें और जो टेस्ट होते थे उसके लिए टेस्ट भी देने आए. स्कूल बिल्डिंग्स केम अप एंड अ न्यू टाइप ऑफ डिसिप्लिन वॉज इम्पोज्ड. स्कूल बिल्डिंग्स भी बनने लगे और नए तरह का डिसिप्लिन भी आ गया. सी स्टूडेंट्स अटेंड देयर स्कूल्स रेगुलरली. The schools which followed these rules were supported and funded by the government. जो भी schools ये rules follow करते हैं उनको कौन support करता था? Government support करती थी. State funding of education started. Independent पाठशालास lost favor. जो independent पाठशालास होती थी वो खत्म होने लगी धीरे धीरे. Because of the year-round teaching cycle, many rural families found it difficult to send their children to school. लेकिन अब इसमें जो year-round पूरे साल जो teaching cycle चलता था उस कारण जो rural families थी वहाँ उनको मुश्किल होने लगी बच्चों को भेजने में स्कूल. On the positive side, girls were encouraged to attend the school. एक positive इसका side क्या था कि girls को encourage किया जाने लगे स्कूल जाने के लिए. So now the catalog children. Classical languages, the languages which were traditionally in use in India like Sanskrit, Arabic
and Persian. ये traditional local languages थे. Pathshala, traditional schools attended by Hindus. Madarsa, madarsa is an Arabic word used for schools attended by Muslims. Envisioned, imagined as a future possibility. Vernacular, a local language or dialect. Now a look over to this chapter. In the 19th century India, elementary education was imparted in pathshalas for Hindus and maktabs for Muslims. Higher education was imparted in tolls and madarsa in Sanskrit and Persian respectively. The first major step in the direction of imparting education was through the Charter Act of 1813. Lord Macaulay recommended the introduction of Western education in India. Mahatma Gandhi started the Nai Talim, which tried to link real life with education. जो नई तालीम थी उसमें real life को education के साथ link किया गया था. So now children, some exercises under this estimation corner. Choose the correct option. Aligarh Muslim University was established in year 1813, 1833, 1845, 1875. It was in 1875. A madrasa was set up in Calcutta to promote the study of Arabic, ancient history of India, Muslim religion, Urdu for Muslim religion. For Muslims, dash were for elementary education. क्या था elementary education के लिए Muslims के लिए? मदरसा, tolls, maktabs, pathshalas, maktabs. Macaulay's Act was introduced in it's 1835, 1854, 1874, 1884. It's 1835. Which of these cities is nearly Shantiniketan? Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. It's Kolkata, children. Fine. Now let's move further. Now children, let's do the fill in the blanks. Macaulay favored education in the dash system. In which system? In English system. Okay. Dash were appointed to supervise traditional pathshalas. Government pandits were appointed. Government pandits were appointed. The Calcutta Madrasa was established in 1781 by Warren Hastings. Okay. Dash believed that people should be trained in handicrafts rather than in literature. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. The Charter Act of Dash provided for rupees 1 lakh to be spent annually for education of Indians in India. The Charter Act of 1813. In pre-British times, the dash and dash imparted elementary education. कौन देते थे elementary education? The Pandits and the Brahmins. Pandits and Brahmins. In 1719, Jonathan Duncan set up a college in Dash to study Sanskrit text. He set up a college in Banaras. Fine. Now, state whether the following statements are true or false. Rabindranath Tagore advocated strict discipline among children. False. He was not so strict. The Woods Dispatch was in favor of introducing English education in India. Yes, true. Lord Macaulay took the side of the Orientalists. False. Sayaji Rao III initiated the process of modern education in Baroda. False. The British were interested in spreading English education in India from the very beginning. No, false. The educational scheme was called the Nai Talim, was introduced by repeating. बस ये 2 लाइन रह गया. The educational scheme called the Nai Talim was introduced by Mahatma Gandhi. True.
All Pathshalas in India were given government grant. Yes, this is also true, children. So, I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay happy and stay blessed. Bye.